India is witnessing a road revolution on a never-before-seen scale. In Gujarat, India's flagship project is under construction. In Rajasthan, roads reach the remotest holes. In Tamil Nadu, sustainable roads are in the making. In Punjab, green and clean highways transform the land. Witness the roads that are engineering marvels. Concrete and asphalt, rock and sand, land and water. Ordinary ingredients that have the potential to build something extraordinary. The starting point, a big dream. The Ministry of Road Transport and Highways has kicked off a road revolution. पहली बार हमने निर्णय किया कि ये नेशनल हाईवे के रोड नेटवर्क को हम बढ़ाएं। तो बढ़ाते समय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो मार्गदर्शन किया उसमें कहा कि केवल ट्रैफिक डेंसिटी जहाँ है, जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है, टोल मिलता है, वही काम आप करोगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया, बॉर्डर एरिया, जहाँ ट्रैफिक कम है, तो इन सब का विचार करके एक नई योजना तैयार करी है। 1,49,000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग है और इसमें से आज हम लोग धीरे धीरे, मैं ये मानता हूँ कि 22 ग्रीन हाईवे बनाने के बाद देश का 60 to 70% ट्रैफिक ये राष्ट्रीय महामार्ग NH पर चलेगा। अब ये करने के लिए हमने भारतमाला योजना तैयार की। उसकी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 1 में 24,000 किलोमीटर है और पूरी योजना 60,000 किलोमीटर की है। Bharatmala's flagship project is to be India's longest expressway. The Delhi-Mumbai Expressway will be a brand new express corridor, almost 1,350 kilometers long. To build this mega infrastructure project from scratch is a task best left to experienced hands. The team at Patel Infrastructure Limited is excited to take on the challenge. जब बिल्डिंग का बात होता है तो हम लोग कंपनी का एज अ स्ट्रेटेजी हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग जो एक बार स्टेट पकड़ते हैं तो वो स्टेट में हमारी टीम को हम लोग एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। वहाँ हम लोग हमारा क्लस्टर बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग लिमिटेड स्टेट्स पकड़ेंगे, लिमिटेड स्टेट्स में हम लोग हमारा टीम एस्टेब्लिश करेंगे और वहाँ क्लस्टर क्रिएट करेंगे। जैसे अभी तमिलनाडु में एक 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का क्लस्टर हमने बनाया हुआ है। गुजरात में हमारे पास है 4 साढ़े 4,000 करोड़ का क्लस्टर। ऐसे ही हम लोग पंजाब पकड़ते हैं, हरियाणा पकड़ते हैं, कर्नाटक पकड़ते हैं। तो जो हो सके उतना ज़्यादा क्लस्टर में हम लोग जब भी हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका कंट्रोल बढ़ता है, आपके ओवरहेड्स कम होते हैं, आपका मशीनरी यूटिलाइजेशन बढ़ता है, आपकी क्वालिटी बढ़ती है और अल्टीमेटली आप एक ओवरऑल पैकेज अच्छा क्रिएट कर सकते हो और एक अच्छी क्वालिटी पे रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। On these 31 and 32 kilometer stretches of farmland that make up Package 2 and Package 3 of this flagship project, the Patel Infra team is setting up camp. Mega road projects need mega investment. To build on a never-before-seen scale at such a rapid pace requires deployment of mammoth manpower and machinery. This base camp at Trasla village in Gujarat's Bharuch district
houses more than 600 men. A contemporary township that houses employees from across the country. With a mess that runs around the clock. Breakfast, lunch and dinner buffets and packed tiffins keep the workers energetic through this 24-hour work cycle at this camp. Regular workshops at the Safety and Training Center help keep the construction process injury-free. The crew works, eats and prays together, creating a unique unity in just 3 months that this site will be operational. So it's a total city inside a camp, I can say, because you need to have all the basic amenities which is needed for a livelihood. It is a proper example, I can say, of a great teamwork, because आपके पास एक limited time होता है project को complete करने में. आपके पास या 1.5 या 2 साल होता है. After you get an appointed date, you have to come on the site, you have to finalize everything, you have to start mobilizing your camp, and you have a limited time of 1.5 or 2 months max. You cannot waste your more time on just setting up the camp and mobilizing the site. So it is a true example, I can say, of a teamwork. Within this 3-month period, the crew of 600 has the task of constructing 63 kilometers of brand new expressway comprising more than a whopping 250 structures. Using the newest tech is what makes this possible. "3D technology helps guide the machine operators to build accurately leveled roads along the whole stretch. For the very first time in India, the world's widest concrete slip-form paver has been deployed. A stunning 18.75 meters wide, this paver paves all 4 lanes in one go. Men, materials and machinery come together to build this expressway at a speed of 2.6 kilometers per day, setting new benchmarks in Indian road construction. Connecting remote rural areas across Rajasthan and Madhya Pradesh's borders, National Highway 52's upgrade is a long-awaited boon to locals. This 48+ kilometer stretch connecting Rajasthan's Dara to Teendhar through Jhalawar is being revamped by the Patel Infra crew. गवर्नमेंट का एक फोकस है कि रोड की गति को कैसे बढ़ाया जाए, रोड की कंस्ट्रक्शन की स्पीड को कैसा बढ़ाया जाए. उसमें हर एक कंसेशनर का या कॉन्ट्रैक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है. तो हम हमारी कंपनी का अगर आपको विज़न बताएं तो आने वाले समय में और अभी जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें स्पीड का बहुत बड़ा महत्व है. जैसे गवर्नमेंट का फोकस है कि पर डे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक रोड होना चाहिए. उसमें इंफ्रा कंपनी का बहुत बड़ा रोल है. तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी, 3D लेवल टेक्नोलॉजी, कई सारी टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग काम करते हैं और हम हमारी इस रोड कंस्ट्रक्शन की स्पीड को और बढ़ाना चाहते हैं. The Patel Infra crew is fighting tight deadlines amidst intense heat. The scorched desert ground is being paved rapidly
In Rajasthan, peak summer temperatures can often soar close to 50 degrees Celsius. As construction continues, the crew comes up against an unexpected challenge. The highway route crosses a busy rail track, a key connection to the country's capital. A high embankment makes it difficult to construct a traditional rail underbridge. The standard size of precast box cannot be fit here. Specially tailored box structures are cast nearby. The embankment is readied. We require to adopt a innovative technique which is box pushing method, and in which to protect earthen bund we require to stabilize the soil with soil laying, and then we also require to protect track by putting relieving girder under the railway track. Then thereafter we require to construct precast box of 13 meter wide and 5.5 meter height, and we require to push them by heavy jacks with synchronizing with each other. New Tech combined with bold ideas to build this road at a speed of 3 kilometers per day. Once complete, many of those who have often felt left behind will now be able to journey towards cities, markets and opportunities at a speed they had never even dreamt was possible. En route to famous temples and tourist hotspots of Tamil Nadu, the marshy delta areas between Satyatope and Cholapuram pose fresh challenges to the Patel infra crew. The rice bowl of India is dependent on agriculture. Its rivers are its lifelines. Its delicate ecosystem requires special attention. This 970-meter under construction bridge over the Kolidam River has to be made with care. To reduce our intervention as well as disturbance in the river, we have adopted segmental pre-stress box type bridge methodology. So in which we have reduced our pier to 20 from initially it was 33, and it is also help us to complete the bridge in lesser time period. Each span weighing more than 700 million tons is precast at the nearby yard. A specially designed fully automatic launcher then places it over the bridge's pillars. Pre-stressed cables make it whole. Once complete, commuters will be on the fast lane across the Kolidam River. Further along the route, delta areas between Cholapuram and Tanjavur challenge the road crew. To reduce cost and create roads that can weather heavy rains, the crew here works with recycled asphalt lead on a special cement-treated base. Aggregate and asphalt from the pre-existing road is reclaimed to make road construction here more sustainable. Recycling happens at specially imported hot mix plates, which enable the Patel Infra crew to salvage more than 40% of the existing road. बिटुमन वी आर सेविंग, क्योंकि इसमें बिटुमन कंटेंट होता है जो
इसकी रेजिड्यू वैल्यू है वो हम सेव करते हैं, प्लस इसके अंदर जो एग्रीगेट है उसकी हम सेविंग करते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसको हम सेव कर पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें फ्यूल सेव होता है, प्लस एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। More than 175 structures are to be built in the process of upgrading this 100-kilometer stretch of highway. A race is on against the clock. Tamil Nadu experiences 2 monsoons. Rainfall begins in June and continues till December. Road construction is possible just for 5 months of the year. A large number of men and machines must work together to meet the deadline. They work day and night to beat the clock. Residents around Punjab's National Highway 64 and 71's jam-packed routes have struggled for years. Patel Infra's crew took on the job of upgrading the national highways to 4 lanes and building bypasses that help truck traffic go around towns. The crew today is working on the highway's green cover. "28,000 saplings were planted during construction. Each of these now stand tall and proud." Recently we started geotagging of all the plants that we are planting on the highways. Last year we planted about 52 lakh trees. Earlier there was a complaint that the survival rate is not as much as is being shown on the papers. So to take care of that, now we are taking a photograph which is geotagged, and every 3 months we will be taking the photograph of every tree, which will show us the growth of the trees, and the contractors will be paid only on the basis of the growth of the trees. It will ensure 100% survival. Further along National Highway 64, in the 40-plus kilometer stretch between Tapa and Bhatinda, safety executives are hard at work. देखते हैं जो चीज़ मान लो साइन बोर्ड कोई नया लगाना या एसिंग शीट वगैरह डैमेज हो गई या उसको रिपेयर वर्क, ऐसा काम ये करना मेरी जिम्मेवारी है। और जहाँ इंक्रोचर काम में लेबर मान लीजिए काम ज़्यादा कर रही है क्रैक सीलिंग पे काम में, तो उनकी सेफ्टी देखना ये मेरा काम है जी। इसमें जो भी एक्सीडेंट होता है जी हमें टोल फ्री नंबर से या HR एडमिन साहब जो उनके पास कॉल जाती है वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं, तो हम उसको लेकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। या किसी गाड़ी का टायर फट गया, जब पंचर हो गया, रोड के बीच खड़ी है, चाहे वो बड़ा हैवी ट्रक है या छोटी गाड़ी है, क्रेन से उसको साइड कर देते हैं ताकि जो पीछे वाली आने वाली ट्रैफिक को है कोई दिक्कत ना हो। A crucial connection between Punjab's firms and country's markets. This national highway is now very busy, and ripples spread everywhere. 10 years ago, Sumit's father opened a dhaba on this route. जब यहाँ टोल प्लाजा बना, अच्छी लोकेशन बन गई, एक सिटी का नाम बन गया, बठिंडा टू बरनाला रोड, अच्छी लोकेशन है, एक मार्केट बन गया। दिन ब दिन प्रॉपर्टी की रेट बढ़ रहे हैं। 2016 से पहले 25-30 हज़ार की सेल थी पर डे की, और 2019 के बाद 30-40 हज़ार के उसके अप हो गया। तीनों ओर का ट्रैफिक इसी रोड पे चल रहा है। बठिंडा टू चंडीगढ़ के लिए इससे बेस्ट रोड और कोई नहीं है। Where roads go, hope follows. Any highway that is being built anywhere, because it is part of the larger picture, it's like the huge machinery. Every single bolt in every machinery is equally important.
one bolt not working, the machinery will stop. I think every contribution is made by every highway that is being built in this country, every big bridge that is being built in this country, is making sure that our highways are world class, our highways will fulfill our future requirements. I think that is the contribution every highway that is being built is making.